Hello everyone and welcome to Pendulum EJU, and here in this session for vocabulary I am back with yet another article for you to discuss. Now for today the article that we've taken is Limited Peace on UAE-Israel Peace Agreement. Now limited peace, which means though the peace agreement has been signed, but there's limited peace. It has come up as a sarcastic statement or an ironical statement that though a peace agreement has been signed, the peace is still not achieved completely. This is a guess. Let's have a discussion and you would come to know. If the UAE does not push Israel to withdraw from occupied areas, their deal is of little value. They say if the UAE is unable to ask or to make Israel withdraw from the occupied areas which it is already occupying, then the deal that they have made, the peace agreement deal, is of not any use, of very little use. That is why it is limited peace. So, abhi what UAE has to do, UAE has to influence Israel to give up or to withdraw the occupied areas from it. Only then the deal made would be up to the mark, would be according to their expectations or satisfaction. The peace agreement reached between Israel and UAE has formalized the thaw in Arab-Israeli relations. Formalize is a verb used right here. Formalize means to give a legal form to something. किसी चीज को legal बनाना, कानूनी रूप देना. ठीक है, तो आप उसको फॉर्मलाइज करो. किस चीज को फॉर्मलाइज करा है? थॉ इज अ नाउन व्हिच मींस अ बॉन्ड और अ कनेक्शन. तो किन के बीच में है ये कनेक्शन? Arab and Israel. So Arab and Israeli relations that has been underway for a few years. तो इस चीज को एक बॉन्ड, एक कनेक्शन अरब इसराइल बनाना चाह रहे थे. इन्होंने ये जो पीस एग्रीमेंट है इसने इसको एक फॉर्मल रूप दे दिया है, एक लीगल रूप दे दिया है. As part of the deal announced by US President Trump on Thursday, the UAE would recognize the state of Israel and establish formal diplomatic relations, while Israel would halt, which is a verb, stop, rokna, stop its controversial plan to annex swathes of the Palestinian West Bank. Annex, that is add on. This is a verb. कहते हैं ना किसी चीज में add on करना, उस चीज को और संयुक्त करना, जोड़ना. ठीक है. swathes मतलब नाउन है ये, पार्ट्स. ओके, तो पार्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक. अब ये जो इजराइल है वो इस चीज को रोक देगा. इट वुड नॉट एड ऑन टू द swathes ऑफ पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक, और साथ के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को ये दोनों साथ में फॉलो करेंगे. Now, on one hand, wherein UAE has to compromise on a few things, similarly Israel has to. So it would be a win-win situation for both of them. Only then this peace agreement would prosper or would benefit both the sides. It is a landmark agreement given that UAE is only the third Arab country and the first in the Gulf recognizing Israel. Now, this is a landmark agreement because UAE is the third Arab country and Israel for the first Gulf recognizing. First. UAE is the first in the Gulf, in the entire Gulf, which has recognized Israel in terms of peace agreement. So, UAE थर्ड अरब कंट्री है और फर्स्ट है इजराइल के साथ इस एग्रीमेंट को डाइव इन करने की इन द एंटायर गल्फ. इट कुड पेव द वे, मतलब पेव द वे इन हिंदी भी से रास्ता बनाता है. इट पेव्स द वे फॉर द रीजन सुन्नी अरब kingdoms and the Jewish majority Israel, enhancing regional cooperation against their common foe. Foe is enemy. Foe is noun. Shia Iran.
So foe means दुश्मन. So वो भाई एक रास्ता बना रहे हैं that they have come up as a cooperation against the common enemy. तो जैसे कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही बात है, इन दोनों ने साथ में आगे तो शिया ईरान एक तरफ है. Israel has said it would focus on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world, while the US has expressed hope that more Arab countries would follow the UAE's lead. Now, US has this expectation that more and more Arab countries would come up and they would follow UAE का step, whatever it has taken, तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे. Arab-Israeli relations have largely been conflict-ridden ever since the state of Israel was declared in 1948. Since 1948, it was conflict-ridden, मतलब it was dominated by conflicts. मतलब जंग से भरा होता था. It's now काफी सारे झगड़े जंग वगैरह चलते रहते थे. It was conflict-ridden. It was completely full of fight and war. Right? That is what. Since 1948, when Israel was declared as a clear state. Further, it says, for Mr. Trump, who played a critical role, it is a rare diplomatic victory just months before he seeks re-election. Now, this is, for US, it is on the contrary a better part or better news to hear. His other foreign policy bets, Iran, North Korea or Afghanistan, were either disastrous or inconclusive. So if we see here, जो उनके दूसरे foreign policy थे, एक तो ये जो ईरान इजरायली जो peace agreement है, that is, sorry, UAE Israeli peace agreement. His other foreign policy जो है वो क्या bet करते हैं, वो ईरान, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान को bet करते हैं कि या तो they will be disastrous or inconclusive, मतलब अनिर्णायक, like impossible to reach a conclusion, एक common point पर नहीं पहुंच पाए, ऐसा होगा. But in the case of Israel and the UAE, both the allies of the US, quiet diplomacy worked. भाई दोनों ही US के against हैं, उनके sorry, both allies of the US, they're allies of US, they're supporter of US, the quiet diplomacy worked. The US had arranged several meetings between Israeli and Emirati officials last year, which probably laid the foundations for the agreements. Now, अगर US के दो supporters हैं, UAE and Israel, और उन्होंने ये दोनों को मिला दिया जिनके बीच में की बहुत सारे conflicts थे, तो US ने अपने दो दोस्तों को मिला दिया. अगर वो दो दोस्त एक हो गए हैं तो फिर US और strong हो गया in terms, right? While the deal has the potential to change Arab-Israeli relations for good, it also shows how the Arab countries are gradually decoupling themselves from the Palestine question. Decouple is a verb which means to separate. Alag karna. So we are noticing that how Arab countries are decoupling themselves. वो अलग होते जा रहे हैं. किन से अलग होते जा रहे हैं? वो पैलेस्टीन क्वेश्चन से, पैलेस्टीनियन से अलग होते जा रहे हैं. The UAE offered full diplomatic recognition in return for Israel's suspension of a planned annexation, not for any relaxation of the actual occupation. So the UAE has planned and it has offered about full diplomatic relation in return, wherein Israel जो है अपना जो annexation है in terms of Palestinian Bank Western, उसको completely suspend कर देगा, उसको खत्म कर देगा. As Prime Minister Netanyahu said, Israel made peace with an Arab country without returning to the 1967 borders. So, this is a statement given by him. So he says कि भाई हमें war नहीं करना पड़ा, जंग नहीं करना पड़ा. The Arab Peace Initiative, a Saudi Arabia initiative endorsed by the Arab League, offered recognition to Israel in exchange for its full withdrawal from the occupied territories. वो occupied territories को छोड़ देंगे Israel और
अरब उसको ऑक्यूपाई करेगा और वो रिकॉग्नाइज करेंगे इसराइल को इस बात के लिए, वो इसराइल को इस चीज़ के लिए और बढ़ावा देंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग पॉजिटिव दैट इसराइल वुड हैव डन इन आई वुड से इन benefit of or in part of Arab UAE. Further it says, ironically, the UAE's peace agreement comes close on the heels. मतलब कि जल्दी से the peace agreement has come close on the heels of the Trump's administration's back-to-back decisions to recognize Jerusalem as Israel's capital and its sovereignty over the Syrian Golan Heights. वो कहते हैं कि जहां पर ट्रम्प ने पहले तो एम्फेसाइज करते रहे कि जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बना दिया जाए और जो उनकी पावर है, अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी इज नाउन व्हिच मींस पावर एंड अथॉरिटी, सीरियन गोलन हाइट्स पर रहेगा, ठीक है। वो इस चीज को चाहते थे कि ये चीज रिकॉग्नाइज हो जाए, जेरूसलम इसराइल का कैपिटल हो जाए और उसकी जो पावर रहे वो सीरियन गोलन हाइट्स पर रहे। इसके साथ साथ ही और इसके चलते ही जल्दी से comes close on the heels मतलब जल्द ही, that is to happen soon afterwards, मतलब इसके बाद ही तुरंत क्या हुआ भाई, यूएई का पीस अग्रीमेंट। तो अगर आप ये देखिए तो ये it is ironical. Clearly the UAE has moved away from the Arab initiative. The question now is whether the Emiratis would be able to press the Jewish state to relax its inhuman and illegal occupation of Palestinian territories and start talks between the occupied and the occupied. भाई एक तो आप जेरूसलम को पहले तो कैपिटल बनाना चाह रहे थे इसराइल का, और अब देखना पड़ेगा कि जो एमिरातीज हैं वो क्या ज्यूइश स्टेट को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि भाई जो इनह्यूमन और इलीगल ऑक्यूपेशन थी उनकी, जो वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा टेरिटरी को ऑक्यूपाई करें, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, वो दैट इज़ अ क्वेश्चन अगेन। If it cannot, the UAE-Israel deal would be of little significance for the Palestinians. भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर आप वो टेरिटरीज उस जो उनको ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे तो उस चीज़ का बेनिफिट भी नहीं होगा। The Palestinian leadership, on its part, should understand the emerging reality in West Asia. The Arab-Israel conflict is coming to a close, but the Palestinian-Israel conflict is to continue without any respite. Respite is noun which means without any pause, without any rest. मतलब कोई मोहलत या कोई आराम का ब्रेक कहते हैं ना, एक तो उसका कोई नहीं है ज़रूरत, उसके बिना, उस ब्रेक के बिना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इजराइल की, ये चलती रहेगी। अब देखो भाई, इजराइल के साथ यूएई आ गया और फिर यूएई पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि उन्होंने जो अग्रीमेंट साइन किया है वो तो इजराइल के साथ कर लिया है। अब उनको जो टेरिटरीज है अगर वो भी उनको नहीं मिलेंगी तो फिर उनके लिए भी बेनिफिट नहीं है और पैलेस्टीनियंस के लिए भी बेनिफिट नहीं है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ दीज people right here. How would they manage with this, right? That's a question. This is the entire article, learners. That is on the peace agreement that is between UAE and Israel. So you see, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसी वाली पॉइंट है यहाँ पर। So UAE को देखते हैं इस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलता है, इजराइल को क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो टाइम ही हमें बताएगा, right? So the word that I would take for you to discuss today for the day, in terms of you being using it, would be foe. It's a noun. It means enemy. दुश्मन को हम कहते हैं foe. एक होता है frenemy. Frenemy होता है जो आपका फ्रेंड भी है और जो एनिमी भी है। ऐसा दोस्त जो दर्शाता है कि दोस्त है पर पीछे भाई दुश्मन ही है, सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखाएगा दोस्त है पर है आपका दुश्मन, वो फ्रेनेमी होता है। Okay, so I want you to use these words and this word particularly in your conversation to actually inculcate and absorb it completely. Let it sink in. Okay, so I will see you in the next session with another article to discuss with you. Do not forget to subscribe the channel for regular sessions with us. Also, not to forget
to hit the like button to the video, because that is what keeps us motivated. I shall see you soon. Thank you.